Georges Méliès, the first auteur. Born December 8, 1861, in Paris to a family of shoemakers, where he worked until his father passed away. He then sold his share of the family business to his brothers and became a stage performer. In 1888, he bought the famous Théâtre Robert Houdin. As owner of the theater, Méliès performed and pioneered a variety of magical tricks and effects to amaze the crowd. But on December 28, 1895, Méliès would witness something that would forever change his life and the lives of future generations. The Lumiere brothers would screen the first ever public viewing of the film. Méliès was amazed by these moving images. He offered to buy the camera off the Lumiere brothers that day. However, they declined. In 1896, Méliès and two other fellows invented and patented their own version of a camera. His first film featured Méliès and some other gentlemen playing cards at a table while he smokes a cigar. One day in 1896, while filming in Paris, Méliès' camera jammed and after a moment started back up again. When he looked at the film, he noticed something fascinating. A truck turned into a hearse, pedestrians changed direction, and men turned into women. This discovery would lead Méliès to pioneer his first ever effect, the stop-motion substitution. To achieve this effect, Méliès would film until a certain point, in this case just before the cloth is removed. He would then stop filming, have the actress leave frame, then the camera would start back up again. By the time he removes the cloth, it appears that the lady had vanished. However, it was Méliès' editing who cut the film on the action, matching it to the next frame, resulting in the disappearance of the lady. Méliès began to use this effect quite often in his films, which later led him to discover a new effect by laying down multiple exposures onto one film strip as seen here in this 1901 film. To achieve this effect, Méliès would have to expose the same reel of film to multiple takes while also being cautious not to overexpose the image. Méliès was one of the first ever to use the fade-in, fade-out technique that is ever so common in films today. In this 1900 film, Méliès would use multiple exposures but would fade them in and out for a magical effect. Aside from altering the film, Méliès placed an immense amount of focus on the production value of his films. One of the key aspects are his elaborate costumes, props, and sets. Méliès quickly discovered that he could use these sets to his advantage to achieve this effect. Méliès would roll a background on a track to make it appear as if the set were moving. Color film was a difficult task for early filmmakers of the 1900s. However, Méliès found a way around that by tinting and painting each frame to achieve this colorized effect. To achieve this effect of walking on walls, Méliès changed the camera from the front row stage to directly above the actor and used his double exposure technique to give us the effect of a man walking on walls. In 1902, Méliès produced his longest and perhaps most famous film, titled A Trip to the Moon. The film utilizes just about all of Méliès' skills and effects, which he edited together to tell a chronological narrative. Méliès would go on to influence some of the most famous filmmakers of all time, but in 1912 his studio shut down because of the war and his career as a filmmaker would abruptly come to an end. Méliès produced over 500 films, however many of them have not survived the tough task of time. Today all of Méliès' effects can be done simply by the click of a button, but in the end the grandfather of special effects will forever influence films and filmmakers throughout the world with his magical style and originality.
सो व्हाट इज विजुअल इफेक्ट्स? ये तो हमने हिस्ट्री समझा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक हम आ चुके हैं. व्हाट इज विजुअल इफेक्ट्स? विजुअल इफेक्ट्स इज अ मिक्स ऑफ लाइव एक्शन, जो ये कैरेक्टर आप देख रहे हो ऑन योर स्क्रीन जिसने एक स्पेस शूट पहना है, इसको एक ग्राउंड लेवल पे लाइव शूट किया गया था. सो दैट वाज लाइव एक्शन. और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी क्या हुई? कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी हुई जो ग्रीन स्क्रीन जो था उसको की किया गया, और उसकी जगह हमने 3D में लैंडस्केप्स, रॉक्स, माउंटेन्स, डस्ट, 2D 3D जो भी इफेक्ट्स क्रिएट करके हमने उसको बैकग्राउंड में डाला गया. और लाइव एक्शन के साथ ये जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है, या 2D है या 3D है, ये इफेक्ट्स है, ये इतनी सीमलेस थी या इतनी फोटो रियलिस्टिक थी कि जो आउटपुट हमें निकल के आता है, इट्स कॉल्ड विजुअल इफेक्ट्स और फोटो रियल विजुअल इफेक्ट्स. कि आप कुछ मेकआउट नहीं कर सकते कि लाइव एक्शन क्या था और कंप्यूटर जनरेटेड 2D 3D इफेक्ट्स क्या था. दैट इज व्हाट इज विजुअल इफेक्ट्स. दैट इज द मैजिक ऑफ विजुअल इफेक्ट्स. अनदर एग्जांपल ऑफ द जंगल बुक, इसमें सिर्फ मोगली का कैरेक्टर वाज live action. So on the left of the screen, you can see that they've shot Mowgli on a blue screen. This was a live action footage. But reference के लिए एक prop, एक आदमी ने ब्लू ही पहना हुआ है उसने भी, और वो लेके घूम रहा है, क्योंकि रेफरेंस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्शन और जिस तरह से पकड़ा हुआ है मोगली ने बगीरा को. बगीरा इज कम्प्लीटली 3D, तो उसका मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन पूरा 3D में किया गया है. और इट्स लाइक रियलिस्टिक एनिमेशन. बैकग्राउंड भी अगर आप देखेंगे पूरा 3D है, जो कि उसको भी टेक्सचर्ड और लाइटिंग वाइटिंग किया गया है. सो लाइव एक्शन फुटेज जो है वो मोगली का है शूट करते हुए, और 3D में जो हमने जनरेट किया है वो है बगीरा. उसका पूरा मॉडल, टेक्सचर, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एज वेल एज बैकग्राउंड, जो एनवायरनमेंट है जंगल का, उसको भी 3D में क्रिएट करके हमने उसको फोटो रियल आउटपुट दी है, रेंडर किया गया फोटो रियल. और जब दोनों को ब्लेंड किया गया, कंपोज किया गया, एक साथ कंपोजिटिंग की गई है, तो उसका जो आउटपुट है वो उतना फोटो रियल है, विच इज कॉल्ड विजुअल इफेक्ट्स. फोटो रियल आउटपुट के लिए देयर आर थिंग्स विच यू मैच. जो लाइव एक्शन के कैमरा होता है और जो 3D और माया का कैमरा होता है, 3D मैक्स में भी कैमरा होता है, माया में भी कैमरा होता है, बहुत सारे अदर 3D के सॉफ्टवेयर है, सब में कैमराज होते हैं. अब ये दोनों कैमरा मैच करने चाहिए, तभी एक फोटो रियल आउटपुट निकलेगी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैमरा इन लाइव एक्शन एंड द कैमरा इन योर सॉफ्टवेयर. So there are things that you match besides the camera also. You match the lighting, you match the shadows. एक पूरा कॉम्पोजिशन जो होता है, फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन, वो आप मैच करते हो. कलर और टोन को मैच करते हो, पर्सपेक्टिव को मैच करते हो, स्केल और प्रोपोर्शन को भी मैच करते हो. तो ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब आप लाइव एक्शन और 3D या कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर में काम करते हो, तो आपको उन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. स्केल और प्रोपोर्शन, द लास्ट पॉइंट. क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एक कैरेक्टर बनाया जो कि 6 फीट का है, और आपने चेयर बनाई जो कि नॉर्मल चेयर अगर 1.5 फीट के हाइट पे होनी चाहिए, तो वो 4 फीट के हाइट पे है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्केलिंग एंड द प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप दोनों को मैच करते हो लाइव एक्शन में भी और सॉफ्टवेयर में भी. वो दोनों जब मैच होते हैं तभी वो लगता है कि रियल है, मतलब फोटो रियल है. सिमिलरली आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पर्सपेक्टिव की,
which is 1 point perspective, 2 point perspective, 3 point perspective. So all that आप जब अंडरस्टैंड करते हो तो आप ये सारे नॉलेज आप अप्लाई करते हो when you're matching both live action and CG. Forced perspective is an in camera effect that uses optical illusion to make things seem smaller or larger than they actually are, based on their position relative to other objects. Not sure how to create this illusion? Don't worry, we're going to show you how. Let's take a look at Lord of the Rings. Considering the hobbit is 3/4 the size of a human, this means that the human needs to be 3/4 closer to the camera than the person playing the hobbit. So if your hobbit is 10 feet away from the camera, multiply that by 3/4 and you'll get the distance the human needs to be, 7.5 feet. Be sure to keep in mind the placement of other objects in the scene and adjust accordingly. Check your lighting and your focus, as these can sometimes highlight the discrepancy between your subjects. If you want the size difference to be even greater, move your subjects even further apart. And finally, make sure your subjects don't look directly at each other, or else they'll give away the illusion. Get them to talk as if the other person is actually directly in front of them. And make sure that the person who's further away looks up a little bit and the person who's closer to look slightly downwards. Next thing is your color and tone. Like I said, you need to understand the color theory. ये सारा आपको term 1 में पढ़ाया जाता है. So it's very important for you to understand the color theory, the color tone, uh, primary colors, secondary colors, tertiary colors. All this is important. There's something called composition and framing. You need to know the rules of composition and framing, which is important for you. And also you need to understand what how you match lighting both in software as well as in live action. Lighting कैसे करते हैं और कैसे match करते हैं. Besides the camera, which matching, which is also called match moving. So ये सारी चीजें हैं जो आप as a visual effects artist आपको knowledge होनी चाहिए, understanding होनी चाहिए. These are the fundamentals जो आगे चल के आप apply करते हो when you're getting into a software. What is the difference between special effects and visual effects? Essentially, visual effects are computer-based effects and special effects are real elements photographed by a camera. Back in the day of the original Star Wars trilogy, all of the effects were called special effects, but in the latest movies they combine special effects and visual effects. Even more specifically, today special effects tend to mean any effect done on set, like stunt work, explosions, makeup effects, and anything shot in camera. These could be miniatures, puppets, and even blue screen when it was photochemical process instead of in the computer. Visual effects are the computer-generated imagery, also called CGI. The first true visual effects in film were done by Industrial Light and Magic, George Lucas's company. He had a two-person department that later became Pixar Animation that created a computer-generated knight in the movie Young Sherlock Holmes. Next came the morphing scene in Willow, and visual effects took another step forward in The Abyss with the water pod sequence. The two biggest leaps of visual effects came with Terminator 2 and Jurassic Park, where traditional special effects were overtaken by the computer-generated counterparts. ILM became only one of dozens of companies to push forward the visual effects industry, and filmmaking has continued to move towards more computer-based effects. The terms special effects and visual effects have changed their meaning in the film industry forever. Hopefully, this helped you understand the difference between them. So कैमरा में क्या important होता है? कैमरा में lenses important होते हैं. आपको you need to understand what kind of lenses are there. Okay, what is focal length, what is aperture, what is uh, frame rate, what is depth of field, what is ISO. These are very important terms which you need to understand
बिकॉज अगर आगे चल के आपने एक VFX सुपरवाइजर बनना है, VFX सुपरवाइजर इज इक्विवेलेंट टू अ फिल्म डायरेक्टर। तो अगर आगे चल के आपको एक VFX सुपरवाइजर बनना है और ना कोई बड़ी फिल्म में काम करना है, तो आपको कैमरा की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, in terms of lenses, in terms of aperture, shutter speed, frame rate, ISO, depth of field. So all these are terms which you need to understand in camera itself. क्योंकि यही सेम चीज़ आप 3D में या सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई करोगे, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरा है. So let's get into a bit of what is focal length. If you see different kinds of lenses होते हैं. Fish eye lens होता है जो 4 mm से लेकर 10 mm तक होता है, और यू हैव मीडियम टेलीफोटो टू टेलीफोटो जो आपको बहुत क्लोजअप में लेके जाता है. ठीक है. सो फिश आई इज मोस्टली यूज्ड, और वाइड एंगल इज मोस्टली यूज्ड फॉर योर लैंडस्केप और आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, जो एक्सट्रीम वाइड एंगल पे आप शूट करते हो यूजिंग एक्सट्रीम वाइड एंगल और अ फिश आई. एंड जो हमारी आईज होती है वो 50 mm के बराबर होती है. दैट इज हाउ वी सी. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन सी दैट स्ट्रीट को शूट करना या डॉक्यूमेंट्री को शूट करना, क्योंकि वो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन होती है, तो इसलिए हम लोग 50 mm यूज करते हैं लेंस. जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं 70 mm 80 mm, इट बिकम्स योर मीडियम टेलीफोटो 100 mm. यहाँ पे हमें पोर्ट्रेट खींचने के लिए हम ये यूज करते हैं अराउंड 80 to 120, which is a medium telephoto for shooting portraits. एंड उसके ऊपर इट ऑल बिकम्स टेलीफोटो, जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स, बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ ये सब जो शूट करते हैं. सो आपको एज एन VFX artist have to understand the different focal lengths, okay, of the lens, what is fisheye, what is wide angle, what is telephoto, all that, and किस पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है. The most important thing that needs to be matched is also the lighting. Like I said, lighting, shading. Okay, all, that is very important. On the left, you can see that huge lights are used in terms of shooting in live action, and then you have lights you can create when you're creating a 3D model or 3D character, उसको भी लाइटिंग करनी होती है. और ये दोनों लाइटिंग जो होती है ये मैच होनी चाहिए. तो ये मैच कैसे होती है? देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड HDRI लाइटिंग. HDRI लाइटिंग इज नथिंग बट यू हैव अ क्रोम बॉल, और उसमें आप कैप्चर करते हो लाइव एक्शन की लाइटिंग, और उसको कैप्चर करके अप्लाई करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर इन टर्म्स ऑफ एज एन इमेज. तो इमेज के अंदर जो भी डेटा होता है अबाउट द कंप्लीट 360 डिग्री लाइट is then applied to a 3D कैरेक्टर, एंड उसके बाद ट्वीक करके लाइट मैच करी जाती है वो 3D एसेट्स कैरेक्टर्स की इन लाइव एक्शन फुटेज. देयर इज ब्लू स्क्रीन एंड देयर इज ग्रीन स्क्रीन. और इसको कब यूज किया जाता है और ये क्या है, ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है. उनको लगता है कि कोई भी यूज कर सकते हैं, बट देयर इज अ लॉजिक टू इट इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे हम when and why we use blue screen, and when and why we use green screen. In terms of you need to understand first of all that blue screen and green screen is the most popular
मोस्ट recognized टेक्निक ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, क्योंकि ये की करते हो आप कलर्स को. ब्लू एंड ग्रीन आर द कलर्स विच कैन इजिली बी कीड, और उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं. ब्लू का चेंज होके they've used a different setting. Even green को change करके they've used a different setting. You can change that background, change the setting, and place a different background. That's what blue and green screen, keying of blue and green screen से ये सब होता है. अभी बेसिकली इन थ्योरी ब्लू और ग्रीन स्क्रीन जो है, हमारा जो स्किन टोन होता है, इफ यू एक्चुअली लुक एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन जहाँ पे हम लोगों ने कलर व्हील रखा हुआ है, यू कैन सी हमारा स्किन टोन आपका ब्राउनिश ऑरेंजिश के आसपास है, और उसके ऑपोजिट साइड में ब्लू और ग्रीन है. सो इन थ्योरी वन ऑफ द रीजंस आर human skin tones naturally do not have any blues or green colors. ये opposite side में color wheel के है. In the color wheel, the skin tones and blue greens are at the opposite. That's what it means. Okay, so next, one of the main challenges जो होते हैं VFX technique में, ये blue और green screen technique में, is to light your background as flat as possible. What even लाइटिंग होनी चाहिए थ्रू आउट योर ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन, टू अवॉइड एनी टोनल वेरिएशन ऑफ द कलर. क्योंकि अगर थोड़ा शेड रह जाएगा ब्लू का या ग्रीन का तो वो ढंग से की नहीं हो पाए, ओके, क्रोमा नहीं हो पाए. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई it is a big challenge to light a blue screen or a green screen. Going next, ग्रीन स्क्रीन में क्या होता है प्रैक्टिकली, वो तो पहले थ्योरी था कि स्किन टोन नहीं है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इन यूसेज. प्रैक्टिकली क्या होता है व्हेन यू यूज ग्रीन स्क्रीन, जो है ग्रीन स्क्रीन की ल्यूमिनोसिटी, ब्राइटनेस बहुत स्ट्रांग होती है, ओके okay? इसलिए डिजिटल कैमरास जो है ग्रीन को रिकॉर्ड करते हैं ब्राइटर और क्लीनर. Digital cameras record green much brighter and cleaner. You can see on the screen as well. There is green and blue on the character. So use green screen preferably for daylight shoot because luminosity है, clear है. ग्रीन स्क्रीन को यूज किया जाता है बेसिकली डेलाइट की शूट में, जब दिन की शूट होती है, और जहां पे बैकग्राउंड जो चेंज करना है, ठीक है, वो ब्राइट. दैट इज वन ऑफ द रीजंस. अगर आपने कुछ चेंज करना है ग्रीन स्क्रीन में शूट करके, जो चेंज करना है वो बैकग्राउंड ब्राइट है, तो प्रेफरेबली ग्रीन यूज करो. नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रीन स्क्रीन. क्या होता है कि ग्रीन में ना बहुत लेस कॉम्प्लिकेशंस होती है लाइटिंग करने में. और क्यों? क्योंकि बिकॉज ल्यूमिनोसिटी स्ट्रांग है उसकी, इसलिए आप काफ़ी चीज़ें आप एडवांटेज ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ, अगर ढंग से लिट भी नहीं हुआ आपका ग्रीन स्क्रीन, तब भी ग्रीन स्क्रीन चल जाता है. पोस्ट में आप जाके उसको ठीक कर सकते हो और यूज कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या होता है ग्रीन का कि अगर आपका कैरेक्टर या जो भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है, वो ग्रीन स्क्रीन के पास खड़ा हुआ है, तो वो ग्रीन का जो स्पिल होता है ऑन द बॉडी और ऑन द सरफेस, तो दैट इज अ डिसएडवांटेज. क्योंकि अगर सरफेस में ग्रीन स्पिल हो गया तो आपको और काम करना पड़ता है उस स्पिल को हटाने के लिए, ठीक है, तो जो इजियर होता है तो थोड़ा और करना पड़ता है. तो उसके लिए यू शुड अवॉइड कीपिंग योर सब्जेक्ट और द कैरेक्टर अवे फ्रॉम द ग्रीन स्क्रीन. थोड़ा सा डिस्टेंस में उसको खड़े करके रखो ताकि वो स्पिल ना हो उसके ऊपर. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक इनटू जब आप ग्रीन स्क्रीन शूट कर रहे हो. एडवांटेज ऑफ ब्लू स्क्रीन क्या है? कोई कलर स्पिल नहीं है उसमें, मोर डिटेल्ड की आता है उसमें, और बेस्ट यूज जैसे ग्रीन स्क्रीन ब्राइट में सीन्स के लिए यूजफुल है, वैसे डार्क सीन्स के लिए
ब्लू स्क्रीन यूजफुल है, डार्क स्क्रीन या डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, उसके लिए ब्लू स्क्रीन यूजफुल है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत हार्ड हो जाता है लाइट करना एक ब्लू स्क्रीन को, क्योंकि ल्यूमिनोसिटी इतनी नहीं है जितनी की ग्रीन स्क्रीन की है, और आपको एक्सपेंसिव हो जाता है, आपको बड़े बड़े लाइट पैनल्स लाने पड़ते हैं इवनली लिट करने के लिए। दैट इज अ डिसएडवांटेज। Another thing that you should understand is, कभी कभार ये होता है कि आप बैकग्राउंड में स्काई है, ठीक है, तो आपने तब ग्रीन यूज किया क्योंकि स्काई ब्लू है। सिमिलरली अगर आपका ऑपोजिट है कि जंगल में शूट कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको ब्लू लेना पड़ता है क्योंकि जंगल के पत्ते ये सब ग्रीन होते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें, आपके बैकग्राउंड क्या है वो सब आपको ध्यान रखना पड़ता है to choose between blue and green screen. So I hope you understand where to use blue and where to use green. Blue screen is good for जब आपका dark scenes हो, dark backgrounds हो, and green screen is better when you're outdoors, daylight है, or you're using brighter backgrounds or brighter scenes to replace the greens. So where all do we use visual effects? बहुत सारी जगह में हम लोग VFX यूज करते हैं। Okay, we will take all these questions as well. Where all do you use visual effects? What kind of visual effects work is going on? What kind of skills is required to make a career, and how to get started? So basically, VFX is used in films, digital platforms, जो Netflix, Game of Thrones, Sacred Games, इस टाइप के सीरीज, टीवी सीरीज, वेब सीरीज में यूज होते हैं लॉट ऑफ विजुअल इफेक्ट्स। बहुत सारी रीजनल फिल्म्स में यूज होते हैं visual effects, and TV and commercials में use होते हैं। Like I said, films, a lot of films use visual effects. A lot of web series, Game of Thrones, Sacred Games में बहुत सारे visual effects use किए हैं। You can see on the left, the main character is using a prop ना, in place of the जहाँ पे dragon का head होगा, तो so that जो interaction है with the dragon's head वो एक relate कर पाए with the animator. So this is all done for helping the animator during the shoot itself. Like I said, TV series में बहुत यूज होता है, खासकर mythological सीरीज में ग्रीन स्क्रीन में बहुत शूट होता है। गेम्स में बहुत यूज होता है विजुअल इफेक्ट्स। गेम इंजन के अंदर भी you have a lot of visual effects, but you need to understand how to use them in a game. So as a you can be a VFX artist and creating VFX for games as well. So on the left is 3D games, and on the right is more of the 2D game. So these are where VFX is used. Ads, commercials में VFX बहुत use होता है nowadays. So what is visual effects and what kind of skills is required to make career in visual effects? That is why we are talking about the fundamentals here. Firstly, you need to be a storyteller. Okay, in terms of आपको एक कहानीकार होना चाहिए, आपके दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ, आइडियाज ये सब होने चाहिए, जो आपको या तो स्क्रिबल करिए आप स्केच में, या आप कुछ वर्ड्स में लिखिए, या कुछ रेफरेंस क्रिएट कीजिए ना। मोस्टली पीपल हु डन रियली वेल अक्रॉस, चाहे वो एनिमेशन में हो या विजुअल इफेक्ट्स में हो, दे आर द वंस जो बचपन से स्टार्ट करते हैं अपना कुछ ना कुछ आइडिया अपने एक डायरी में या एक स्केच बुक में नोट करने के लिए। So one of the main skills of somebody who wants to get into visual effects is they need to be a storyteller.
वो एक कहानीकार होने चाहिए, जिनके पास अमेजिंग आइडियाज हो, स्टोरीज हो, जो वो ड्रीम करते हो या फैंटेसाइज करते हो या विजुअलाइज करते हो, ठीक है, एंड जो कि वो क्रिएट कर सके through the medium of visual effects. So that's one of the main skills that you need to have if you want to make it big in visual effects. Secondly, this is how VFX storytelling works. आप जो आइडिया है उसकी एक स्क्रिप्ट बनाते हो, ओके. Most of you who are doing term 1 know कि you have to come up with a nice idea of a fantasy or a science fiction idea. सो उसकी एक स्क्रिप्ट बनानी है आपने, उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना है. अब ये स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने के लिए यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट द कैमरा angles and the camera movements, okay. You need to have understanding of film language, how you compose your shots or you frame your shots, because you are using all that in your storyboard. आप storyboard में उसका rough निकालेंगे, उसका कैमरा एंगल क्या है, कैमरा मूवमेंट क्या हो रहा है, उस सीन और शॉट में क्या दिखा रहे हैं हम लोग, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है शॉट का, ऑल दैट कम्स इनटू द स्टोरी बोर्ड. एंड नॉर्मली स्टोरी बोर्ड के बाद जो एनिमेटिक्स होता है इन VFX वी कॉल इट प्रीविज. सो प्रीविज इज दैट आप 2D या 3D में क्रिएट करते हो एक विजुअलाइजेशन, प्री विजुअलाइजेशन कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म प्रीवियस कहते हैं. यू प्री विजुअलाइज व्हाट आपने स्टोरी बोर्ड में लिखा है, ड्रॉ किया है, इनटू अ एक्शन सीक्वेंस. सो बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, वही प्री विजुअलाइजेशन देख के द VFX सुपरवाइजर, द art director, the film director, all of them would be following the pre-visualization. So what kind of skills is required to make a career in visual effects? Okay, so like I said, आपको कैमरा के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. सिनेमाटोग्राफी एंड फोटोग्राफी अगर आपकी हॉबी है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, लाइटिंग, ये सब ऑब्जर्व करते हो. So your observation skill has to be really good as a VFX artist. You have to have knowledge about camera lenses, अलग अलग कैमरा लेंसेस, टेलीफोटो, वाइड एंगल, कैसे टाइप के कैमरा लेंसेज होते हैं. हाउ डू यू फ्रेम और कंपोज द शॉट, दैट इज इम्पोर्टेंट. लाइटिंग के बारे में, शेडिंग के बारे में, शैडोज के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है. एंड फाइनली द पर्सपेक्टिव, स्केल, प्रोपोर्शन, ये चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है एज अ VFX आर्टिस्ट. So now we come to something which is called the VFX techniques. Okay, these are techniques which you will be learning as VFX artist, and further as VFX supervisors. आपको दोनों टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, प्लस शूट कैसे ग्रीन स्क्रीन में शूट होता है, कैमरा कैसे सेटअप होता है, लाइटिंग कैसे होती है ग्रीन स्क्रीन की या ब्लू स्क्रीन की, ऑल दैट, प्री विजुअलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, ये सारी टेक्निक एज अ VFX सुपरवाइजर आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. In today's films, it is possible to create almost anything. But the work is definitely not that easy. It includes many hours of attention to small detail, lots of creativity, and a high level of skill. This world is called VFX and is built from many parts in a long pipeline that creates something amazing. And that's what you see on the big screen. The last role in this long pipeline of visual effects is called digital compositing,
which is a creative process of assembling filmed and rendered elements from multiple sources to create a final, lifelike illusion. What is that, you ask? Let me show you. It's a profession that includes many skills such as rotoscoping, which separates the foreground from the background, and there are all kinds of techniques to accomplish it. In films, it is common to use a blue or green screen to easily remove the background from behind the actors, and that is called keying. And by doing that, we can create a more realistic background behind the actor. Tracking is another side of the story, and it is very important to know how to do well. There's 2D tracking, and there's 3D tracking, which recreates the exact movement of the camera. Another big part of this job is to remove objects, cables, and trackers, and paint them out and insert something else instead. And, of course, there's computer-generated elements, or, in short, CG compositing. But my friends always say VFX looks fake.